There are always two ways to find a way. Either walk down the road taken by everyone or take the one less traveled by. The choice makes all the difference. Located at the distance of 49 kilometers from Lahore, Kasur is famous for its cuisine, leather processing, and shrines. Vivid and vibrant, the spirit of festivity hums through the streets and squares of this ancient city. However, just like any other town in Pakistan, Kasur is also surrounded by villages with a lifestyle that is in sharp contrast to the city. An example of this is Dhala Kalan, with 7 villages comprising 2,861 households. The area presented a typical dismal picture of rural area in Pakistan. No school, no healthcare, backward and outdated farming techniques, leading to poverty, hunger, disease, and worst form of exploitation at the hands of middlemen and brokers. The middleman, or the Aarti as it is called in local Punjabi dialect, provides loans to the farmers at exploitative interest rates and by creating a lien on the crop. In effect, the farmer is not a lender but a serf of the Aarti, who virtually owns every crop that is cultivated by the farmer and his family with their blood, sweat and tears. Bereft of resources, outdated farming techniques and lack of structured efforts, the farmers in Pakistan are left alone to counter the challenges posed by water shortage, natural calamities and above all, economic exploitation at the hands of the middlemen. That exactly was the case with the farmers of Dhala Kalan. It took our team countless hours of brainstorming, some out-of-the-box thinking and incisive advocacy to reach out to the local communities with an impact. Therefore, in 2006, Dunya Foundation laid its first brick with a mission to empower the most underprivileged social strata through financial support, education and skill development, and a vision to enable everyone to live a reputable life. Agriculture is the backbone of our national economy. 70% of our population is settled in the rural areas, mostly in abject conditions aggravated by poverty, literacy and disease. Started in 2014, Dunya Foundation initiated Dunya Rural Development Program under its name in collaboration with like-minded organizations with prime focus on uplifting the socio-economic conditions of rural communities in Pakistan through a unique Adopt a Family model for a comprehensive and long-lasting impact via interest-free loans, capacity building and farmers training, education and healthcare. दुनिया फाउंडेशन ने जब काम का आगाज़ किया तो सर्वे के बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ पे जो है वो कम से कम 1000 जो फैमिलीज़ हैं उनको हम फैसिलिटेट करेंगे और उनकी ज़िंदगी में जो है वो हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो 3 साल के लिए ये टारगेट रखा गया था और अभी इस काम को 2 साल और 4 माह हो चुके हैं, तो अब तक जो है वो 794 जो फैमिलीज़ हैं उनको हम mobilize कर चुके हैं। This exclusive program with an inclusive approach started with the adoption of one family by Dunya Foundation in 2006. Now, there are over 1100 plus families who are benefiting from this program. From 1 to over 1100 plus families, numbers always speak louder than words. The success of the program was anticipated when as a first step, we decided to eradicate the Aarti system and pave a path for a better future. To counter this illegitimate interest malaise, Dunya Rural Development Program has focused on financial empowerment of the farmer through interest-free loans. ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੂਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1800 ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 25 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 40 ਮਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। Freeing them from the chains of never-ending debt and harvest lien. This indeed was a major breakthrough for the people of Dhala Kalan, and soon this effort started nourishing heaps and bounds. अब हमको दुनिया फाउंडेशन की तरफ से जो कर्जा मिल रहा है, इससे हम अपनी फसल को जहां मर्जी अपने फरोख्त कर सकते हैं। Future without education is a future without hope. With this in mind, a 2-room school was started with only 20 students. ये स्कूल 1998 में स्टार्ट हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता 1, 2, 3, 4 ऐड होते रहे। कोई 1 साल के बाद बच्चे और ज़्यादा ऐड हो गए, तकरीबन 20 के करीब स्ट्रेंथ हो गई।
फिर साथ साथ टीचर भी मिलते रहे और बच्चों को खुद तलाश करने लगे और तलाश करके जमा करते रहे, लेके आते रहे और वो तादाद बढ़ती रही। फिर उनको ज़रूरत फील हुई कि 2 रूम्स और हो जाएं, 4 रूम हो गए। Over the last 10 years, the school has evolved into a state-of-the-art campus with 1,200 students on its roll. Today, it is providing free education, free course books, stationery and uniforms. Using latest procedures of instruction, the school is imparting quality education, also focused on health and skill development of the children. The success of the school had an intended effect. We started winning hearts and minds. Pakistan is ranked 25th in the countries with highest infant mortality rate. 1 out of every 14 children dies before its first birthday. The situation of maternal mortality rate is even worse and is glaringly nightmarish in the rural areas due to lack of basic healthcare services. Therefore, DRDP has established a health camp in Dhalakala to provide medical services to the adopted families as well as to the residents of the area. यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले हम मेडिसिन लेने के लिए बहुत दूर जाया करते थे, अब इतना फ़ायदा हो गया कि हमारे माँ बाप का, बहन भाइयों का फ्री इलाज हो रहा है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी होती हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, फ्री में सब कुछ मिलता है, दवाइयाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। Under this program, customized health camps are organized by Dr. Yasmin Rashid and her team to offer curative and preventive health care to more than 900 people per week. We are here for a medical camp being organized by our Junior Foundation and Central Park Medical College and Bhatti Hospital. यहाँ पे मेडिकल कैंप करने का मकसद एक्चुअली ये है कि यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी और उससे ज़्यादा मैटरनल मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिस इज़ अ पेरिफेरल एरिया एंड इट इज़ बीइंग क्राउडेड बाय द डाइज एंड द क्वैक्स एंड द पेशेंट्स आर वेरी मच यूज्ड टू गोइंग ओवर देयर। तो हमारे पास जो पेशेंट्स का इनपुट सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल और भट्टी हॉस्पिटल्स में आ रहा था वो पेरीफ्री से कॉम्प्लिकेट करके आ रहा था। सो दुनिया फाउंडेशन हैज़ टेकन अ स्टेप टू प्रोवाइड अ मेडिकल कैंप फॉर द पेशेंट्स ओवर देयर। हम यहाँ पे पेशेंट्स का ट्राइएज करते हैं कि विच पेशेंट्स आर हाई रिस्क विच आर टू बी रेफर टू द हॉस्पिटल्स इमीडिएटली, और फिर हम उन्हें अपने हॉस्पिटल्स सेंट्रल पार्क में और BIT में रेफ़र करते हैं जहाँ पे उनकी प्रॉपर एवेलुएशन होती है और उनको वर्कअप के बाद जो है वो फिर जो है फर्दर मैनेजमेंट के लिए उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो दिस कैंप इज़ वर्किंग इन अ वे कि अब पेशेंट्स का इनपुट हमारे पास बहुत अच्छा हो गया है, पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी बहुत रिड्यूस हो गई है और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आना बहुत कम हो गए हैं। In addition, we have also initiated a result-oriented farmer training program to introduce latest farming techniques, free access of quality seeds, fertilizers, latest equipment for land leveling, cultivation and water management have performed a miracle in our target region. हमें हर महीने के आखिरी हफ्ते में दुनिया फाउंडेशन वाले अपनी मीटिंग में शामिल करते हैं ज़मींदारों को, और वो अच्छे तरीके से हमें रिलीव करते हैं फसल के बारे में और हमारे माल मवेशियों के बारे में। डॉक्टर वगैरह का ये इधर हमें विज़िट करवाते हैं। हमारे जानवर भी अब तंदुरुस्त हैं, हम बर वक्त उनको मेडिसिन वगैरह हासिल करते हैं, जबकि फसल की औसत भी अब अच्छी हो रही है। Once farmers are able to get better yields, it enables them to invest in livestock, families' education and health, thus gaining economic stability for individual and collective prosperity. Unemployment is one of the most serious problems faced by Pakistan, especially in villages. One of the main causes of unemployment is the lack of market-oriented skills. Parallel to free education, healthcare and agricultural loans, skill development of our adopted families members and general public remains the focus of Dunya Rural Development Program for sustainable socio-economic uplift of the rural communities. जब हम पूरी फैमिली को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो फिर इसी तरह हमने देखा कि जो लोग किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो अगर तालीम नहीं हासिल कर रहे या स्कूल की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, तो उसके लिए हमने टेक्निकल ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम शुरू किया और हमने अपने करीबी शहरों चुनिया और इसी तरह कसूर के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके अंदर बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भेजा। इस तरह अगर किसी बच्ची ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया या किसी लड़के ने जो है वो वेल्डिंग का कोर्स कर लिया, सीख लिया, तो वही कारोबार शुरू करने के लिए उनको बाकायदा कर्ज़ हसना दिया गया और उसी कर्ज़ हसना से उनको जो है वो नया कारोबार शुरू कराया गया। इस तरह उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी मुकम्मल की है और जो है वो अपने कारोबार शुरू करके जो है वो बाकायदा एक अच्छा और बाज़ेद रोज़गार भी शुरू कर दिया। Regular vocational training programs for skill enhancement
are conducted in collaboration with partner NGOs. These programs equip the youth with marketable skills for respectable employment opportunities. Interest-free financing of small and medium-sized enterprises is a practical measure which is nurturing an aptitude of entrepreneurship among the youth of the area. बहुत सी ख़वातीन घर में फ्री बैठी रहती थी, उन्होंने कर्जा लिया और अपनी जो भी काम उन्होंने चलाना था चलाया। मसलन फॉर एग्जांपल उन्होंने मशीन ले ली, तो बहुत सी ख़वातीन अब लोगों के कपड़े स्टिच करती हैं उस मशीन से और अपने घर का खर्चा चलाती हैं। Enlightened, employed and empowered, our adopted families in particular and the people of Dhalakala in general are happy with what Dunya Foundation and Dunya Rural Development Program have done for them. For us, Dhalakala is just a beginning of a long and challenging journey that Dunya Foundation and Dunya Rural Development Program have undertaken. Come what may, we are committed to further expand Adopt a Family project to other villages with a mission to transform the whole Pakistan into a home sweet home of a big, happy family.